हाय गाइस, वेलकम टू मोटर मैनियक्स। आई एम अक्षय एंड गाइस बहुत ही एक्साइटिंग दिन है आज। अ मोटरसाइकिलिंग आइकॉन विच इज़ रॉयल एनफील्ड क्लासिक विच स्टार्टेड इन 2008, उसकी लेटेस्ट इटरेशन इज लॉन्च्ड टुडे, the classic 650. You already know guys, we were anticipating this bike for a long time. The reason being, this bike is a motoring icon. This is a bike that has in a way shaped Royal Enfield and has driven dreams for a lot of people. And so now with the latest generation, first of all I would like to say beauty matters. मैं क्यों ये चीज़ कहना चाह रहा हूँ? Because just look at the bikes. दे आर एपिटमी ऑफ एलिगेंस। आप इसका डिज़ाइन देखिए, जो ओवरऑल जो सारा जो बेसिक्स हैं जो बाइक के, दे आर बेस्ड ऑन द शॉटगन 650, बट जो सारा डिज़ाइन है, ओवरऑल डिज़ाइन है, इट इज़ फॉर फ्रॉम द क्लासिक। जो क्लासिक की इन्होंने एक डिज़ाइन एलिमेंट्स जो इन्होंने यूज़ किए हैं, इट इज़ a little bigger than before compared to the 350. अगर आप overall proportions देखेंगे, overall size देखेंगे, of course it's bigger with the tried and tested and the amazing 650cc engine जो इनका Interceptor और GT में आता है, and also many other models. But guys, this out of the whole 650 range, I believe is pure art. The bike is so beautiful. Just look at this the tank, which has been a signature design element of the classic from the very start. Then इसके अंदर एक और जो एक बहुत ही इन्होंने खूबसूरत चीज करी है, if you come closer, to me is the highlight. Just feel these the whole instrument cluster here. It is so beautiful. They've actually chromed and polished the cluster here, and just look at this. Just look at this beautiful hinge. It feels like a solid piece. Now these sort of details, अब ये सारी जो चीजें हैं ना, they don't come cheap. And Royal Enfield ने attention to detail दी है सारी चीजों के ऊपर to make it look beautiful. और अगर मैं आपको एक और डिटेल दिखाऊंगा, is because I believe this bike is all about details. Just look at this hub here. अब एक हब को देखिए, आपने शायद किसी और बाइक पे एक हब और ये डिटेल नहीं देखा होगा. They have actually chromed and polished the hubs. Even the hubs are chromed and polished. Look at this. Have you seen this? किसी और बाइक में आपने देखा है कि इतना ज़्यादा attention to detail दिया कि इसको भी क्रोम किया हो गया? अब मैं I would like to say again, मैं रिपीट करना चाहूँगा guys, beauty matters. अब इस बाइक के ऊपर हम आते हैं, especially the teal green, which is of course I believe the highlight of the range. Just look at the bike and the chassis, the body parts, everything is in the same color. It is in the same color of teal green, जो उसका launch color था back in 2008. आप इसको देखिए, even जो इनका oil cooler cover है is in the same color, is in teal green. The chassis is in teal green, and even the side stand and the center stand is in teal green. Can you think of a bike that is so beautiful, that can carry this, कि एक ही कलर chassis का हो और एक ही कलर उसकी बॉडी का हो? It's a very very rare thing guys. This is really really beautiful. Another thing guys, I believe when we talk about the rider's triangle, proper क्लासिक का जो एक हमेशा से एक अपराइट प्रॉपर कमांडिंग पोजीशन होता है, वो इसके अंदर है. एंड आई रियली डू फील गाइज, अगर मैं आपको बता सकूं कि इसके अंदर जो फ्रंट व्यू आता है, इट इज़ सो ब्यूटिफुल. रीजन बीइंग, ये जो फ्रंट नसेल है, इट इज़ पहले भी 350 जो क्लासिक थी उसका भी वाज अ हाईलाइट, बट इट लुक्स इवन मोर ब्यूटिफुल इन द 650cc वर्जन. इट्स अ लिटिल बिगर देन बिफोर एंड इट लुक्स ब्यूटिफुल. अगर आप एज अ राइडर की पर्सपेक्टिव से आपको बताता हूँ, यू हैव अ रियली रियली ब्यूटिफुल लुक अप अहेड. Just feel this. You have this beautiful hinge here. You've got this amazing looking instrument clusters, and you have this teardrop tank, which is again in this particular color is hand striped. So after the whole thing, let's give you a bit of sound.
the regular 650cc engines, I believe this is a smoother tone. इसकी tone बहुत smooth है, bass exhaust में regular 650 से ज़्यादा है, which I believe जो overall theme है बाइक का उसके हिसाब से बहुत अच्छा mix बन रहा है उस चीज़ का. So guys, again I would like to end this video with the same thing. Beauty matters. I believe आज हम जिस launch event पे हैं, the sort of attention this bike is having, is enjoying, not only from the male people but also from the female crowd is amazing. And guys, we are coming up with a new series on the Classic, not only about more about this and the test ride of this, but also the history of the Classic. So stay tuned for more, and we'll see you again. So like, share and subscribe to the video, and we'll see you soon. Thank you.